Guys, welcome to another video, and but this time it's this Wikipedia page. So yeah, I just uploaded a video and you can see that this is which I was talking about. China Airlines Flight 611. So yeah, it's according to Wikipedia. So let me read. Boy. No. China Airline Flight 611 was a regularly scheduled international passenger flight from what should I written? Cheng. Nah, I will just read it. Taiwan International Airport in Taiwan to Hong Kong International Airport in Hong Kong. So yeah, you got it. So this plane registration number is here. And the reason of its crash was because of a tail strike. And the reason of the crash was because of a tail strike. Tail strike, and before its crash, tail strike was deadly. I mean, it happened due to a tail strike. And yeah, now let's read. The date was 25th of May 2002. I just said it wrong. In-flight breakup due to improper, repair. Taiwan Strait, 45 kilometers, 24 nautical miles northeast from Pingyu Islands, Taiwan. And here's the coordinates right here. Next week here. So this is the island and just 45 kilometers here. The plane crashed. Aircraft type Boeing 747 209B. Operator China Airlines. IATI. Flight number CI 611. IDK, what is this? CAL 611. Call sign Dynasty 611. Registration. This. Flight origin. This. Flight destination. This. Occupants 225 passenger 206. Crew 19. Fatalities all. Yeah. So let's read a summary. On 25th of May 2002, the Boeing 747 operating the route destroyer, mid-air and crashed onto the Taiwan Strait, 32 nautical miles, 43 kilometers, 26 meters, and IDK. Northeast from the Pyongyang Island, 20 minutes after takeoff, killing all 225 people on board. The in-flight breakup was caused by a metal fatigue cracks from tail strike Kai-Tak in when the aircraft in Kai-Tak in airport in when the aircraft was not properly repaired according to Boeing's policies and manual. The crash remains deadly in Taiwan, as well as the most recent accident with fatalities involving China Airlines. The second deadliest accident in China Airlines history behind China Airlines Flight 440 with 2 all
all fatalities. Yeah. देश में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और कुछ प्रतिशत मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वालों का भी है। वैसे जर्मनी के लगभग 30% लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ लगभग 95% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं और इसके अलावा कुछ प्रतिशत सोवियाई, नॉर्थ क्रिश्चियन, डेनिश, तुर्की और कुर्दिश भाषा बोलने वालों का भी है। जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम इतना So स्ट्रांग let's है see कि this. बच्चे This was the अंग्रेजी whole भाषा में flight. चलता है, जो लगभग 99% है। यहाँ कंपलसरी और फ्री स्कूलिंग के जरिए एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल भी है और Yeah, एकेडमिक so एक्सीलेंस के साथ-साथ प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी फोकस करता है। यहाँ का ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम एक खास है hmm? जिसमें फॉर्म और हाई क्वालिटी का माना जाता है। So I इसमें don't मेडिकल just और मेडिकल not डिग्री read का इस्तेमाल होता this. है। हाई लिटरेसी रेट और गुड हेल्थ केयर सिस्टम वाले इस देश में लोग हर At स्टेज में around अपनी लाइफ में आगे बढ़ना 1705 पसंद करते हैं। पढ़ाई local सिर्फ time, and एग्जाम तक military जरूरी होती है, Lockheed बल्कि C भारत के साथ 130 Hercules aircraft spotted a साथ crashed airliner तजुर्बा 23 nautical हासिल miles करते हैं, जिसे कैथरीन from द्वीप northeast कहा of जाता है। Macun Pecan इस Islands. वाक़ये पर Oil, was उड़ान stick, चलाने के तरीके oil को stacks नया were करने वाला also spotted at the same time. और भी The मजबूत first body बनाने was वाला found होता है। फुर्सत के at समय फैमिली के साथ टाइम स्पेंड 1811. करने के अलावा No जर्मनी में distress एक्सरसाइज और गेम्स खेलना sign ज्यादा पसंद or करते हैं। communication was sent out to the driver of the crash. Radar data suggests इसके the अलावा aircraft broke into four बैडमिंटन, pieces at बास्केटबॉल और FL विंटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे काफी 35 पसंद किए जाते हैं। 130 जर्मनी में 150 लोग रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन of और flight level. समय की पाबंदी को अहमियत देते हैं और एनवायरनमेंट Base को बचाने के theory लिए रिसाइकलिंग का महत्व भी समझते supported हैं, जिससे by प्लास्टिक fact that some रिसाइकल lighter करके लोगों को articles प्लास्टिक have कम been करना found चाहिए। inside प्लास्टिक का उपयोग aircraft which were found रिकवरी up दृष्टि से to सबसे 130 अच्छा तरीका kilometers काटा जा सकता है। from the यहाँ crash पर site या नॉर्थ at जर्मनी में village in central काफी उच्च Taiwan. सेंट्रल अपलैंड्स The items जहाँ पर included काफी magazines, ऊंचे documents, पहाड़ काफी luggage, ऊंचे पहाड़ photographies, हैं। new इन Taiwan पहाड़ों के dollars, बीच aircraft से safety cards, सागर से and पानी China बहता है Airlines और Airbus एक चौड़ा समुद्री blood ढलान है। ये bloodstained पहाड़ी समुद्र pillowcase. के किनारे दलदली क्षेत्र और रेतीले किनारे इस The देश में plane बसे was हैं। यहाँ supposed to की be leveling off, समुद्री नदियाँ इस इलाके को approached सिंचाई at cruising और altitude यहाँ की खेती की जमीन 35,000 feet. उपजाऊ हो जाती है। बात करें मध्यवर्ती उच्च भूमि की, तो ये उत्तरी निचले मैदान के And you पास might be स्थित है। thinking, what my mom is listening to again? Well, she is just listening to some random things. 35,000 feet अमेजन फॉरेस्ट or अमेजोनस, वोगल्सबर्ग प्लेटो, 11,000 थुरिंगियन फॉरेस्ट इस इलाके के meters पहाड़ों के बीच में shortly है। before the यहाँ की breakup. जमीन और Oh, shit. हाइड्रोलॉजी यहीं से खेती और Shortly, तकनीकी मध्य क्षेत्र दक्षिण और सागरी क्षेत्र अपनी चौड़ी खाड़ियों shortly before the और breakup of the ऊंचाई के ढलानों और two of the मैदानी four मौसम के aircraft कारण engines were और began अमेरिका providing silently high ऑस्ट्रिया से thrust, आगे बढ़ रहा है, वो इस देश का which सबसे was बड़ा later क्षेत्र है। found ये क्षेत्र अपने बाहरी to विस्तृत have क्षेत्रफल, been within खाड़ियों और the normal मैदानों ranges के of लिए the जाना जाता है। deviation. जो जर्मनी भी में हो. सबसे ऊंचा The, स्थान for all बर्लिन four का है, engines were recovered from the sea and found भूगोल से 2500 not to have किलोमीटर any ऊंचा suffer है और इस देश की राजधानी malfunction to prior the crash. Pieces of आगे the बढ़े aircraft समुद्र के नीचे were समुद्र found on the समुद्र ocean नीचे है। वैसे and भौगोलिक on क्षेत्र के Taiwan, बारे में including the city of मौसम और क्षेत्र के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि the जर्मनी Republic के of भूगोल और अर्थव्यवस्था Taiwan में अहम and the भूमिका People's निभाता Republic है। of China अगर cooperated जर्मनी the जलवायु को recovery समझनी है तो in उसके लिए the पानी का recovery आवश्यक भी है। cooperated in the recovery of the aircraft. Chinese allowed पढ़ना persons from और China to लिखना search the bodies of and fragments on those parts of the सीखा जाए। भारत Taiwan strict controls by जो जर्मनी controlled by और People's लगभग यूरोपियन Republic देश हैं, of China. 6 देशों में China टैरिफ Airlines requested relatives of से गुजरती है। to submit जर्मनी blood सागर में samples स्थित है। for DNA testing. जापान के लिए A महत्वपूर्ण जलमार्ग है। criminal investigation bureau of National यूरोप Police और investigation अमेरिका now को जोड़ती है। National Police रेलवे जर्मनी की Agency सबसे लंबी नदी है। and two other इससे location लगभग and at two 728 other किलोमीटर की locations. दूरी तय करने वाली ये नदी चेक गणराज्य में उत्पन्न होती है, फिर जर्मनी में प्रवेश करती है और यहाँ से United Daily News उन the शहरों से होकर के गुजरती what है। उत्तरी सागर में United ड्राइविंग the की United Daily News started that some relatives of the passengers have been described इसी तरह डैन्यूब भी जर्मनी
described the existence of the flight to Hong Kong as being unnecessary. Most of the passengers intended to arrive in mainland China, but due to the lack of direct air links between Taiwan and mainland China, the travelers had to fly, fly via Hong Kong. The relatives were evacuated to opening of direct air links between Taiwan and mainland China were eventually released. But I don't know what does that mean, but yeah. गांव शहरों और देशों को आपस में जोड़ती आई है। इसके अलावा ओडर नदी का भी विशेष महत्व है। पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाने वाली ये नदी No, yeah, it was actually tail strikes that you can go now. एक महत्वपूर्ण नदी Serious. में काम करती है। नदियों के पास अगर हम झीलों को देखें तो जर्मनी में झीलों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इनमें कॉन्स्टेंस झील सबसे बड़ी है और इसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया देशों के साथ साझा करता है। ये झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी काफी फेमस है, Let जो me कि हर search it. साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। वहीं पूरी तरह से जर्मनी में स्थित सबसे बड़ी प्राकृतिक झील म्यूरिट्स झील है। इसके अलावा ड्यूमर, स्टाइनहुटर, किन्सी, सावरबर्गर और अमरसी झीलें भी अपनी विशेषता और प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से बेहद खास है। और यहाँ की जलवायु भी Yeah, China. जर्मनी की जलवायु समशीतोष्ण है, यानी टेम्परेट क्लाइमेट, जिसका मतलब है कि यहाँ न तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही कड़ाके की ठंड, लेकिन यहाँ पर मौसम बड़ी तेजी से बदल सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान और बारिश में आंशिक Whoa, whoa. No, 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 no. Wikipedia. ज्यादा होती है और पूर्वी हिस्सों में बारिश कम होती है। पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है जबकि कुछ घाटियां शुष्क रहती हैं। ऊपरी बावरिया में फोहर नाम की गर्म हवा चलती है और No, उत्तरी yeah, क्षेत्र की सर्दियां ज्यादा cause. ठंडी होती है। तो क्लाइमेट के इस मिजाज को जान लेने के बाद अब बारी आती है जर्मनी के नामकरण So, और guys. इतिहास को जानने की। जर्मनी का Yeah. लैटिन शब्द And also, so yeah, done. And का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वर्साई की संधि हुई और वीमर गणराज्य बना। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और उसने नाजी शासन स्थापित किया। उसकी नस्लवादी और विस्तारवादी नीतियों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध I got one new account. यहूदियों के खिलाफ नरसंहार हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की And yeah, bye bye.